Hello everyone, welcome back to the channel. So we are on our last stage of the chapter Biotechnology, and today we will study about the processes of recombinant DNA. However, in the previous video we have gone through our tools of recombinant DNA technology, where we have discussed restriction enzymes, gel electrophoresis, vectors, competent host, and the methods so that we can transfer the vectors with rDNA into the host organism or the competent host. And now we will see the process of recombinant DNA technology in detail, and this process is completed with several steps but in a particular sequence. So the first step in this process is isolation of genetic material. Means our desired DNA has to be isolated from the cell in a pure form, where there will be no macromolecules with the DNA, because we know inside the cell, inside the nucleus, there are many other molecules with the DNA. So for this, the cells are treated with certain enzymes so that the cell wall of the particular cell can be broken down. Like for example, bacterial cell lysozymes are added, and for plant cell cellulase is used, and for fungal cell chitinase is used. And if we talk about animal cell does not have any cell wall, so there is no requirement of any type of enzyme to break down the cell wall of the organism or of the cell, and after this, the cell is released from the cell, but it is released along several macromolecules. So for this, we need to go through the purification and separation of the DNA. As macromolecules are there with the DNA, means DNA molecules are intertwined with the histone molecules, which are proteins. So these can be removed by the treatment of protease. And pure DNA molecules are precipitated by adding chilled ethanol. Precipitated means when chilled ethanol is added to that DNA in a test tube. So like here you can see thread-like structures appear. This is precipitation, and then these thread-like structures can be extracted by the help of spooling process. So this is how purification and separation is done. After this, cutting of DNA at specific location is done, and this is done by the help of restriction enzymes that we have already seen in the previous video. If not, you can just go through the previous video so that you can easily understand what are restriction enzymes and how do they work on the DNA molecule. And after cutting by restriction enzyme, the DNA sample is made to run through gel electrophoresis. That also we have seen in the previous video. And the process is also repeated for the vector DNA as well, because for transfer of our desired DNA, or for cloning of the DNA, we need vector DNA as well. So all these processes are repeated for vector DNA also. And after cutting the desired DNA from the source and vector DNA with the same and specific restriction enzyme, both are mixed and ligase enzyme is added, and ultimately we get our recombinant DNA. So basically, vector DNA and ligation with the vector DNA is done to clone the desired piece of DNA. Now we will see some alternative method, that is PCR, alternative method to the cloning with the vector. वेक्टर के बिना अगर क्लोनिंग करनी है तो उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है PCR, that is polymerase chain reaction, where there will be amplification of the desired piece of DNA. Amplification means the number of the desired piece of DNA will be increased. So this process was first developed by Carey Mullis in 1985, and the requirement for this process to be occur is DNA template. First of all, obviously means that DNA which needs to be amplified or increased number. The second one is nucleotide primers. These are the 10 to 18 nucleotide long and complementary sequences, and these are complementary to the DNA template.
and then there are enzymes which are required, or basically we can say one particular enzyme which is required that can be used at high temperature. So these are the requirements of PCR. Now we will go through the working of PCR, or the steps that are included in PCR. The first step is denaturation, means the target DNA is heated at very high temperature, near about 94 degrees Celsius, which results in the separation of the two DNA strands. Like here you can see, as soon as the temperature increases to near about 94 degrees Celsius, the two strands now separates, and both these strands then act as template DNA. Means both these strands will take part in the process of PCR. After the separation of the DNA, annealing is done. So basically annealing is the step where primers are added to the template DNA, and near about 40 to 80 degrees Celsius of temperature is provided to that sample or to the solution where there is presence of DNA template strands. The thing you need to learn here is, or remember here, is that the primers are added at 3' end of the template strand. ये दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, उनमें जाके ये प्राइमर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं नियर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस एंड एट 3' एंड, बिकॉज रेप्लिकेशन जो है बेसिकली रेप्लिकेशन ही होगी इसमें, क्योंकि एडिशन होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, तो वो चीज़ जो है दैट स्टार्ट्स एट 5' एंड 5' एंड से ही रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट करती है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन PCR इज extension means now the nucleotides will be added to the template strands. This is the third step and the last step, and in this step first of all DNA polymerase is added, which is usually Taq polymerase. This enzyme is extracted from thermophilic bacterium, which is Thermus aquaticus. See guys, here this bacterium has the ability to survive at very high temperature, and as this step is also take place at about 72 degree Celsius. 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो स्टेप है वो होता है आपका. And here you can see like the Taq polymerase is added. But here the you can see the Taq polymerase is moving, and but here the thing is that with the enzyme, magnesium ions and DNTPs are also added, which magnesium ion facilitate the process of extension, and DNTPs are required because we need to just replicate the template strand, so we need nucleotides also. So this is the whole process of PCR. Here you can see like two strands are given which are heated, and those strands then get separated. This is denaturation. Then after denaturation, primers are added at 3' end of both these strands, and this is annealing. After primers are added, DNA polymerase, which is specifically Taq polymerase, which has the ability to work at high temperature, and with it magnesium ion and DNTPs are also added, and then the extension of the DNA template strands take place. So this cycle is repeated multiple times so that billion copies of the desired DNA can be obtained. Now the fourth step after cutting, after first of all isolating, then cutting, then going through PCR, the fourth step here comes is insertion of the recombinant DNA into the host. So that also we have done like vector and vectorless methods, which included heat shock, then there was gene gun, chemical method, electroporation, and then there was micro injection. So these are some of the methods which helps to insert our required DNA or the recombinant DNA into the host cell. But the question here arises is that how to confirm whether the recombinant DNA has been successfully inserted in the host or not. And for this
means how to differentiate between transformants and non-transformants. Transformants are the cells which have successfully taken the rDNA, and non-transformants are the cells which have not taken the rDNA. And how can we differentiate between them? For this we use selectable markers. First of all मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो बच्चे, इस चीज़ को ऐसे लेके मत चलना कि सिर्फ एक ही होस्ट सेल लेते हैं, एक ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेते हैं और उसको हम लोग आपस में मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट करवाते हैं होस्ट सेल में. नहीं, वी टेक मल्टीपल होस्ट सेल, वी टेक मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनएज, एंड सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ inserting the recombinant DNA into the host cell increases, and that's why we need to differentiate between the transformants and non-transformants, or recombinants and non-recombinants. So for this, selectable markers are used which help to identify recombinants and non-recombinants, and basically two frequently used selectable markers are there. The first one is antibiotic resistant genes. So we will just take an example here. Suppose there is a recombinant DNA which consists of your any antibiotic resistant genes. Suppose we are taking here ampicillin resistance. Okay, so what we will do, we will just add this plasmid or the recombinant DNA into a bacteria, say E. coli, which will be the host cell. So the bacteria becomes resistant, right? Resistant to the E. coli. ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है जिसमें हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट rDNA डाला था, नाउ ये बैक्टीरिया हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन. मीन्स एम्पिसिलिन अब इस पे एक्ट नहीं कर सकती है, वो अब ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसमें वो जीन है. तो क्या होगा, व्हेन वी विल ऐड दिस बैक्टीरिया और वी विल ट्राई टू ग्रो दिस बैक्टीरिया, or we can say there will be multiple number of bacteria in a कल्चरिंग प्लेट. जब हम उस प्लेट में हम लोग मीडियम डालेंगे, सपोज हम लोग एक प्लेट में बैक्टीरिया की कॉलोनी को ले रहे हैं जिनमें कि हमने कुछ में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गए, कुछ में नहीं गए, उनको अब हम लोग ग्रो करवाएंगे एक मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन होगा. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग अ कल्चरिंग प्लेट वेयर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन मीडियम. सो व्हाट विल हैपन हियर, the transformant means the bacteria who have successfully taken up the recombinant DNA will grow in the medium, and the bacteria who are not recombinants, means who have not taken the rDNA successfully, will die in this medium. ओके ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसमें कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थे वो आ गए, कुछ में नहीं आए. तो जिनमें नहीं आए मीन्स विच आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, दे विल डाई इन दैट मीडियम विच विल कंटेन एम्पिसिलिन. क्योंकि एम्पिसिलिन उन बैक्टीरिया, एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, इट विल एक्ट ऑन द बैक्टीरिया एंड इट विल नॉट लेट द बैक्टीरिया टू ग्रो और सर्वाइव. लेकिन जिनमें वो जीन्स थे जिन्होंने सक्सेसफुली उस rDNA को या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया था अपने अंदर, वो क्या हो जाते हैं, अब एम्पिसिलिन से खुद को रेजिस्ट कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दे विल ग्रो. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. सो दिस इज वन मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स. वी विल सी the difference between recombinants and non-recombinants by the help of enzyme producing genes. So most commonly used enzyme producing gene is LAC gene, which synthesize beta galactosidase. तो यहाँ पे भी हम suppose we are taking a recombinant DNA or just we are taking a plasmid which consists of a gene which is LAC gene, means which produces beta galactosidase enzyme. ठीक है, ये एक कोई प्लाज्मिड है जिसमें कि ये पोर्शन जो है, this portion okay produces beta galactosidase. This portion is of LAC gene. Now what we will do, we will insert a piece of desired DNA in this portion only. हम इसी पोर्शन में LAC जीन के पोर्शन में, मीन्स LAC जीन्स के बीच में इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को हम लोग डालेंगे.
तो इससे क्या होगा, उसका जो सीक्वेंस है लैग Z जीन का वो चेंज हो जाएगा एंड देन दिस लैग Z जीन बिकम इनएक्टिव। ये जो लैग Z जीन है, नाउ दिस कैन नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हम लोगों ने एक प्लाज्मिड लिया जिसमें कि लैग Z जीन प्रेजेंट थे, मीन्स दिस जीन आर used to produce beta galactosidase enzyme. Now if we alter this portion only of the plasmid, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन के बीच में हम लोग एक अपने डिजायर्ड डीएनए को डाल देंगे, तो क्या होगा, लैग Z जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया, मीन्स द लैग Z जीन बिकम्स इनएक्टिव, इट इज नाउ नॉट able to produce beta galactosidase enzyme. Okay, now what we will do, we will insert this recombinant DNA, the inactivated lag Z gene into a host cell और मल्टीपल होस्ट सेल्स। अब इन मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जिसमें कि हमारा इस पोर्शन में डिजायर्ड डीएनए भी था, उसे हम डालेंगे होस्ट सेल्स में। होस्ट सेल्स में डालने के बाद क्या करेंगे, नाउ वी विल लेट इट ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग X-gal. X-gal is a modified version of galactose. Okay, X-gal में अब हम इसको डालेंगे। होता क्या है यहाँ पे अब कि X-gal जो होता है, that in the presence of lag Z gene gives blue color, ठीक है, वो ब्लू कलर देता है। तो अब अगर हमने क्या किया है, हमने इनएक्टिवेटेड lag Z जीन को होस्ट सेल में डाला है। अब जब हम उसको X-gal वाले मीडियम में डालेंगे, तो जिनमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया है वो वाइट कलर की रहेंगी, वो आपका ब्लू कलर नहीं देंगी। लाइक हियर यू कैन सी सम ऑफ द colonies are of blue color. These are the this is the culturing plate of bacteria where we have inserted recombinant DNA into the bacteria. तो जिन बैक्टीरिया में, जिन होस्ट सेल में rDNA सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, क्योंकि लैग Z जीन इनएक्टिवेट है, तो वो अब X-gal के साथ मिलकर ब्लू कलर नहीं दे सकता, तो वो उसी कलर का रहेगा, मीन्स पर्टिकुलरली वो वाइट कलर का रहेगा। लेकिन जिनमें वो चीज़ नहीं हुई है, मीन्स उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो वो सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ है, वो क्या होगा, ब्लू कलर देगा, बिकॉज लैग Z जीन्स आर स्टिल एक्टिव देयर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बेटा ध्यान से सुनना और याद रखना इसे, दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक प्लाज्मिड को हम लोगों ने, जिसमें लैग Z जीन्स प्रेजेंट थे, वो जीन्स को हमने ऑल्टर कर दिया बाय एडिंग आर डिजायर्ड डीएनए। उसको फिर हमने डाला होस्ट सेल में, फिर उन होस्ट सेल्स को हमने एक मीडियम में ग्रो करवाया, वो मीडियम था X-gal। X-gal जब लैग Z जीन्स के साथ, मीन्स जब लैग Z जीन जो हैं वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेंगे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स के साथ मिलके वो ब्लू कलर देता है टू द बैक्टीरिया। बट अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेसफुली जिन जिन सेल्स में इंसर्ट हुआ है, वहाँ पे वो ब्लू कलर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे लैग Z जीन जो थे वो ऑल्टर हो गए थे, वो चेंज हो गए थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। और जिन्होंने सक्सेसफुली इसको नहीं लिया वो ब्लू कलर के थे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया है, सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है होस्ट सेल में अपना जो हमारा डिजायर्ड पीस था डीएनए का। सो बेसिकली पूरी की पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इट इज परफॉर्म टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट और कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड दैट प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स विच आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। And the cells having rDNA are grown on small scale in the laboratory under controlled conditions, and similarly simultaneously host cells are allowed to grow in continuous culture, and for large scale production bioreactors are used.
ठीक है। तो पूरी की पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट मोटिव क्या है कि हमें अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हैं वो चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। स्मॉल स्केल पे जब हम लोगों को सेल्स को कल्चर करना होता है तो दे आर ग्रोन इन लेबोरेटरी, ठीक है। And host cells are allowed to grow in continuous culture, and for large scale production of the product, bioreactors are used. Sorry for my spelling mistake over here. So now we will see what are bioreactors. Bioreactors are large vessels which are used for biological conversion of raw material into specific products. So अब थोड़ा बहुत bioreactors के बारे में जान लेते हैं. Basically it consists of an agitator system which helps to mix the content, means एक बड़ा सा वेसल होगा जिसमें एक agitator system होगा जो कि पूरे के पूरे सोल्यूशन को मिक्स करने में हेल्प करेगा. देन देयर विल बी एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन की जो इनकमिंग है उसको अलाउ करेगी इनसाइड दैट वेसल. देन देयर विल बी फोम कंट्रोल सिस्टम. बिकॉज एजिटेटर सिस्टम एक रोटेटर टाइप होगा तो वो क्या करेगा, because of presence of some solution, some proteins, vitamins also for the host cells to grow. तो जब वो रोटेटर घूमेगा तो वो क्या कर सकता है, वो फोम, वो झाग बना सकता है. तो अगर झाग बनेगी ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपरली नहीं होगी. सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ फोम कंट्रोलर सिस्टम एज वेल. देन देयर विल बी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, pH कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट. सैम्पलिंग पोर्ट मीन्स जहाँ से हम लोग अपना जो डिज़ायर्ड जो हमारा सैम्पल है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द वेसल. So now we will see the types of bioreactors. Basically there are two types of bioreactors. One is simple state tank bioreactor and one is part state tank bioreactor. So दोनों के बीच में आप थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं. In simple state tank bioreactor there is presence of rotators three we can say positions. 3 positions में rotators present हैं which help to mix up the solution. And then there is presence of foam controller system also here, foam breaker which will help to break down the foam. Then there is presence of pH control system, sterilization system is there. ठीक है, तो ये सारा का सारा स्टेट टैंक बायोरिएक्टर का एक आप डायग्राम जो है वो देख सकते हैं. देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पार्ट स्टेट टैंक बायोरिएक्टर जहाँ पे कि सिंपल सा एक लास्ट में एक हाइड्रोडायनामिक रोटेटर जो है वो लगा होता है विच हेल्प्स टू जस्ट मिक्स अप द कंटेंट. एंड लास्ट में यहाँ से एयर जो है वो अंदर डाली जाती है सो दैट इनसाइड द वेसल देयर इज इनलेट ऑफ एयर सो दैट जैसे जैसे बबल्स जो होंगे दैट विल गो अप तो एयर जो है वो प्रॉपर्ली पूरे के पूरे वेसल में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. So these are the two types of bioreactors. Now in this process we have come to our last step, that is downstream processing. After going through all the processes, now the time comes where we have to collect the product from the bioreactor. And after collecting this, ठीक है, कलेक्शन हमने करनी है इसकी बायोरिएक्टर में. जितना हमारा जो प्रोडक्ट था वो अब बन गया है एंड फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है, सेपरेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है. इस स्टेप को हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, वेयर देयर इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोरिएक्टर. सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद द product then goes for clinical trials and quality control. For example, in case of if we say we have to obtain drugs, sorry again for the spelling, if we have to obtain drugs तो उसके लिए clinical trials होते हैं, quality control होता है, and then the product is available and the product can be then simply marketed. So this was all about biotechnology. Thank you.